वेलकम बैक। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कौन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाज़ती तसव्वुर खत्म कर देंगे। मजीद कहा, आइंदा कशीदगी खित्ते और इसके बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyanu Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime.